Hello guys, welcome to my channel Learning Smart with Dapanata. I am Dapanata and today's video is going to be about Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer is the father of English literature. Let me tell you before that why you should watch this video. Questions from Geoffrey Chaucer is usually asked in every kind of examination. People who are giving masters, people who are pursuing honors in English, or who want to be professors, or any kind of exam, UGC NET, SET, TGT, whatever exam that you're giving. This from Chaucer questions are asked. So let's dive into the topic directly. So what are we going to discuss in this whole video? We will talk about who was Geoffrey Chaucer, life of Geoffrey Chaucer, why was Geoffrey Chaucer special, his masterpiece, the Canterbury Tales, which he had written, why is Chaucer important, and death of Chaucer. So, like I told you, Geoffrey Chaucer is the father of English literature. He was born around 1343 in London in the Middle Ages. He was a poet, philosopher, diplomat, and also known as the father of English poetry. Now, let's see who was Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer was born around 1343 in London in the Middle Ages, like we've learned just now. Now, he didn't come from a very royal family, but he served powerful people. He worked as a courtier, diplomat, and even customs officer. Now, I'll tell you how. Now, Geoffrey Chaucer did not receive any formal literary awards or prizes like we have today, Nobel Prize, Booker Prize, etc. Because वो जब मतलब थे तब वो 14th century था 1343 to 1400 and long before modern literary awards even existed. So at that time patronage, that is support from the kings, nobles and the church, was the way writers and poets were recognized and rewarded. मतलब वो जिस एरा से बिलोंग करते थे उस वक्त ये अवार्ड वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करता था 1343 से 1400 की बात कर रहे हैं. तो उस वक्त कैसे लोग उसको अवार्ड करते थे. सब किंग होते थे तब किंग को उनका काम पसंद आता तो वो लोग अवार्ड करते थे. जैसे कोर्ट में बुला लिया, कोर्टिया बना लिया, कोर्ट का मेंबर बना लिया है, चर्च एंड नोबल्स भी. सो दैट इज़ हाउ दे वर रिकग्नाइज्ड. सो ऐसे ही रॉयल पेट्रनेज में ही वॉज सपोर्टेड बाई किंग एडवर्ड थ्री, किंग रिचर्ड टू एंड जॉन ऑफ काउंट, दैट इज ड्यूक ऑफ लैनचेस्टर, जो कि उनको पेंशन भी देते थे और उनका पोजीशन भी बढ़ाते थे. पब्लिक सर्विस पोजीशंस जैसे ऐसे ही वो कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स बन गए, डिप्लोमेटिक एनवॉय में काम करने लगे, किंग ऑफ द शायर बन गए, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो उनके काम की वजह से उनको उनका काम में पोजीशंस मिला एंड नॉट लिटरली एनी अवार्ड और anything like Nobel Prize or Booker Prize or like that. Okay. He also traveled to France, Italy and other countries where he was influenced by great writers like Dante and Boccaccio. So उनसे influence होके ही उन्होंने अपना काम mainly start किया, but his works were the best. Now, why was Geoffrey Chaucer special? अब Chaucer special क्यों है? Because सब बहुत सारे पोइट थे उस वक्त, बट सब क्या चूज़ करते थे, लैटिन में लिखना या फ्रेंच में लिखना. बट ही डिड नॉट चूज़ दैट. ही वॉज नॉट कॉमन अमंग ऑल ऑफ देम कि हम वो लैटिन और फ्रेंच में लिखें, बट ही चूज़ टू राइट इन इंग्लिश विच वॉज नॉट कॉमन बैक देन. ओके. येस, ही बिलीव्ड इन इंग्लिश एंड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेल ब्यूटिफुल स्टोरीज एंड ही प्रूव्ड इट. वो हम लोग आगे जो उनका मेन वर्क है, द कैंटरबरी टेल्स, वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड वर्क्स ऑफ जॉफ्री चौसर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाई वॉज ही सो स्पेशल एंड हिज राइटिंग्स वर सो स्पेशल. His masterpiece, the Canterbury Tales. Now, Chaucer's most famous work is the Canterbury Tales, which is written in late 1300s. It's a collection of stories told by a group of pilgrims traveling to Canterbury. Each pilgrim comes from a different part of society, like a knight, a merchant, a nun, even a poor student. Now, not discussing more about Canterbury Tales, there are many more points that we can discuss about Canterbury Tales, but let me just it what is written here, because उसके लिए हम एक different video बनाएंगे on Canterbury Tales. So Chaucer का जो most important और famous work था वो Canterbury Tales ही था. वो एक क्या है, एक collection of short stories है. दो स्टोरीज जो सारे पिलग्रिम्स हैं वो जाते वक्त सुनाते हैं और दो स्टोरीज आते वक्त सुनाते हैं. ओके. नाउ क्या है कि एक क्या होता है, वो लोग सब जाके टबार्डन में मिलते हैं एंड उसका जो मेन जो ओनर रहता है, जो होस्ट रहता है, वो कहता है कि आप लोगों को एक फ्री मील मिलेगा यहाँ पे अगर आप लोग सब दो स्टोरी जाते हुए सुनाएंगे और दो स्टोरी आते हुए सुनाएंगे.
और जिसका स्टोरी बेस्ट होगा उसको एक फ्री मेल मिलेगा. सो दैट्स हाउ दिस सीरीज बेसिकली बिगैन एंड देवर टोटली दे टोल्ड 2 stories and they came back while telling 2 stories. So this is how the entire Canterbury Tales book is made. Stories are mentioned in that book. Okay. Now उसमें सारे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे. नाइट थे, नन थे, मंक थे, then many other, even Chaucer himself was also there. Now, through their stories, Chaucer shows us the real life picture of medieval England. उनकी स्टोरीज से हमें क्या पता चलता था कि medieval England कैसा था, उसी पे बेस्ड करके सब स्टोरीज बोलते थे. तो इट्स humorous also, religion based stories was also there, class system was there and even corruption. So उस वक्त जो जो चलता था उस सब चीज़ों के बारे में चौसर ने उस बुक में लिखा है थ्रू द डिफरेंट स्टोरीज दैट वर टोल्ड बाय डिफरेंट पीपल. Okay, now the tales were written in Middle English. Chaucer uses rhymed couplets, vivid characters and humor to entertain and educate. तो वो जब अपने ज़बानी बयां कर रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या यूज़ किया, राइम्ड कपलेट्स यूज़ किया था, विविड अलग अलग कैरेक्टर्स यूज़ किया था और भी बहुत कुछ, ताकि वो स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके. ओके. नाउ इवन दो ये जो पूरा कैंटरबरी टेल्स है वो कंप्लीट नहीं है, but it is considered as a milestone in English literature. Later I'll make a separate detailed video on Canterbury Tales so you can watch that. Okay, now let's discuss why is Chaucer important. अब हम Chaucer क्यों पढ़े, why is it important? Okay, apart from that it will come in exams and all of that. तो why will it come in exams? क्यों इतना importance रखता है ये character, मतलब ये personality? So Chaucer is often called the father of English literature because he proved that English could be used for serious and artistic writing. तो उन्होंने क्या प्रूव किया था कि इंग्लिश हम लोग सीरियस और आर्टिस्टिक राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. He was one of the first to use iambic pentameter, a poetic rhythm that later inspired Shakespeare also. So Shakespeare भी चौसर से इंस्पायर्ड हुए थे क्या यूज़ करने में, iambic pentameter. He also helped develop character driven storytelling where people are not just symbols but real फ्लॉड ह्यूमन बींग्स. तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेस कर देते हैं, हीरोइक बना देते हैं, दिखा देते हैं कि फ्लॉलेस है. पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत रियलिस्टिक स्टोरी बोला, स्टोरी टेलिंग भी इतना ज़्यादा रियल और जैसा है वैसा हो सकता है वो उन्होंने उनके काम में दिखाया. Okay, so without Chaucer we can say English literature might have taken a very different path. Okay, so now let's discuss about Chaucer's death. Chaucer died in 1400 and he was buried in Westminster Abbey, and his tomb became the first in what is now called Poets' Corner, a huge honor in English literary tradition. तो टूम को पोएट्स कॉर्नर बना दिया, जो कितना बड़ा ऑनर हो सकता है किसी के लिए कि उनकी डेथ के बाद भी उनके काम को इतना सारा प्रेस किया जा रहा है एंड उनके टूम में लोग जा रहे हैं बिकॉज इट्स नाउ मेड अ पोएट्स कॉर्नर. ओके, so now let's quickly revise what we have learned. So Chaucer was called the father of English literature because he wrote in English when most of the writers at that time wrote in Latin or French. He is the author of the Canterbury Tales, which is the most famous work because it had realistic characters and social commentary. Social मतलब इंग्लैंड के बारे में बताया गया है through storytelling. He also popularized Middle English. He helped establish English as a respected literary language. He innovated poetic style because he used iambic pentameter and rhymed couplets, जो कि later poets जैसे शेक्सपियर को भी इन्फ्लुएंस किया था वैसे स्टाइल में लिखने के लिए. Characterization mastery. He created lifelike, diverse characters representing all classes of society. So उन्होंने अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया, एक उनको जैसे जिंदा कैरेक्टर्स की तरह शो किया उनके वर्क में. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस फ्रेम नरेटिव स्ट्रक्चर, जो कि हम कैंटरबरी टेल्स में देख सकते हैं, जो कि है स्टोरी विद इन अ स्टोरी, कि हम एक स्टोरी लिख रहे हैं पर उसके अंदर भी एक स्टोरी है, कोई बोल रहा है वो स्टोरी. सो दैट इज़ नाउ वाइडली यूज्ड इन लिटरेचर. ब्लेंडेड ह्यूमर, सटायर एंड मोरालिटी. सो मोरालिटी को, ह्यूमर को और सटायर को उन्होंने अच्छे से ब्लेंड किया था. तो ही क्लेवरली रोट एंड क्रिटिसाइज करप्शन स्पेशली विद इन द चर्च एंड सोशल सिस्टम. तो उन्होंने सोशल सिस्टम को वहाँ पे उनका निंदा भी किया था, क्रिटिसाइज भी किया था कि कैसे उनके जो सिस्टम्स थे वो करप्टेड थे. उन्होंने इस बारे में भी बात किया था, विच नीड्स कट्स अगेन. He worked in government and royal court, served as diplomat, court official and member of parliament, showing that his influence was beyond literature. So that's all what we have discussed in the entire video about Geoffrey Chaucer. ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करने के लिए, बोलने के लिए, but I have tried to keep this video short and ताकि आपको बेसिक जो Geoffrey Chaucer के बारे में पॉइंट्स है, नॉलेज है, वो आप लोगों को मिल जाए. So if you like this video, please do like the video.
share and subscribe my channel. Do not forget to subscribe, please, because I get motivated with your subscription and likes. And if you have any question, you can ask in comments. Thank you.